What does tomorrow look like? To us, it looks like a world of boundless possibilities. At Mahindra, we push our limits every day so that we can rise for a better tomorrow. We aim to futurize today by thinking alternatively, by moving forward and paving new paths. We rise for good by helping drive sustainability, by creating businesses that transform lives, and growing even more than before. We futurize by helping design smart cities and smarter lifestyles for an increasingly interconnected world. We rise for good by shaping destinies and empowering the underprivileged in our communities. Tomorrow is a new world, and what we do today defines our tomorrow. At Mahindra, we choose to rise, not just for a few of us, but for all of us. Mahindra Rise. Can't is a powerful word. It makes things look impossible. Look how big the challenge is, it says. You can't possibly do anything about it. And once you convince yourself that you can't, then you just can't. So perhaps it's time we convince ourselves that we can't. We can't give up yet. We can't lose hope. We can't be broken. And we can't be beaten. The only thing we can do, no matter how many times we fall, is rise.
what does tomorrow look like? To us, it looks like a world of boundless possibilities. At Mahindra, we push our limits every day so that we can rise for a better tomorrow. We aim to futurize today by thinking alternatively, by moving forward and paving new paths. We rise for good by helping drive sustainability, by creating businesses that transform lives, and growing even more than before. We futurize by helping design smart cities and smarter lifestyles for an increasingly interconnected world. We rise for good by shaping destinies and empowering the underprivileged in our communities. Tomorrow is a new world, and what we do today defines our tomorrow. At Mahindra, we choose to rise, not just for a few of us, but for all of us. Mahindra Rise. Can't is a powerful word. It makes things look impossible. Look how big the challenge is, it says. You can't possibly do anything about it. And once you convince yourself that you can't, then you just can't. So perhaps it's time we convince ourselves that we can't. We can't give up yet. We can't lose hope. We can't be broken. And we can't be beaten. The only thing we can do, no matter how many times we fall, is rise. छुटकी जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ। आजा। पकड़ ले, पकड़ लिया? पकड़ लिया। अरे गोविंद। अरे भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। चलें बेटा? पापा, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी। हाँ। फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी। हाँ। फिर जब तू फर्स्ट आएगी, हाँ। तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर नहीं, पायलट। अच्छा, पायलट? फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना? पक्का? पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी। अपने फैसले खुद करेगी। बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट। जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी।
तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ। तो पापा, फिर तो हाथ से निकला अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है। लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। लाइफ जैसी बनाओ वैसी बनती है, जितनी सवारो उतनी निखरती है। जैसे बचपन को कैनवस बनाया और भर दिए उसमें क्यूरियोसिटी के रंग। दुनिया बसी है तुमने, सरप्राइज देने का जरिया बनाया, जहाँ पापा झट से घर पहुंचे फॉर चुटकीज परफॉर्मेंस। साथ बढ़ने का रास्ता दिखाया, जहाँ कम्युनिटी ने हौसला बढ़ाया। एक बेहतर कल का सपना सजाया, जहाँ एनवायरनमेंट को अपना दोस्त बनाया। तुमसे ही है ये समा, दादी को ऑलराउंडर की नई पहचान मिली। बदला है सारा जहां। ऐसा सेकंड इनिंग्स का पिच सजाया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजनेस के सक्सेस का मंत्र बताया। तूने हर लम्हे को सवारा है, गोल्स अचीव कर सको ऐसी पार्टनरशिप्स का प्लेटफॉर्म बनाया। और ऐसा घर बनाया जिसने आपके सक्सेस को अपने गले लगाया। ये सब मुमकिन किया है एक सोच ने और उसे सच बनाने की जिद ने। क्योंकि लाइफ जैसी बनाओ वैसी बनती है, जितनी सवारो उतनी निखरती है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, क्राफ्टिंग लाइफ। What does tomorrow look like? To us, it looks like a world of boundless possibilities. At Mahindra, we push our limits every day so that we can rise for a better tomorrow. We aim to futurize today by thinking alternatively, by moving forward and paving new paths. We rise for good by helping drive sustainability, by creating businesses that transform lives, and growing even more than before. We futurize by helping design smart cities and smarter lifestyles for an increasingly interconnected world. We rise for good by shaping destinies and empowering the underprivileged in our communities. Tomorrow is a new world, and what we do today defines our tomorrow. At Mahindra, we choose to rise, not just for a few of us, but for all of us. Mahindra Rise. Can't is a powerful word. It makes things look impossible.
Look how big the challenge is, it says. You can't possibly do anything about it. And once you convince yourself that you can't, then you just can't. So perhaps it's time we convince ourselves that we can't. We can't give up yet. We can't lose hope. We can't be broken. And we can't be beaten. The only thing we can do, no matter how many times we fall, is rise. छुटकी जल्दी आ। टिफिन लिया? हाँ। आजा। पकड़ ले, पकड़ लिया? पकड़ लिया। अरे गोविंद। अरे भैया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है अच्छा है। वैसे जरा संभल के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। चलें बेटा? पापा, मैं हाथ से क्यों निकल जाऊंगी? बताऊं? देख, अभी तू स्कूल जाएगी। हाँ। फिर मन लगाकर पढ़ाई करेगी। हाँ। फिर जब तू फर्स्ट आएगी, हाँ। तो बड़े शहर में जाके इंजीनियर बनेगी। इंजीनियर नहीं, पायलट। अच्छा, पायलट? फिर तो तू मुझे प्लेन में मुफ्त में घुमाएगी। घुमाऊंगी ना? पक्का? पक्का। हाथ दे अपना। चल बेटा, शाबाश। फिर क्या होगा? फिर तू पायलट बन के बहुत सारे पैसे कमाएगी। अपने फैसले खुद करेगी। बड़ी बड़ी हीरोइनों की तरह जीन्स पैंट पहनेगी। जीन्स पैंट? हाँ, जीन्स पैंट। जहां मन करेगा वहां जाएगी, जब मन करेगा तब जाएगी। तू अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी, है ना? हाँ। तो पापा, फिर तो हाथ से निकला अच्छा है ना पापा? बहुत अच्छा है। लड़की के हाथ कामयाबी तब आएगी जब लड़की हाथ से निकल जाएगी। लाइफ जैसी बनाओ वैसी बनती है, जितनी सवारो उतनी निखरती है। जैसे बचपन को कैनवस बनाया और भर दिए उसमें क्यूरियोसिटी के रंग। दुनिया बसी है तुमने, सरप्राइज देने का जरिया बनाया, जहां पापा झट से घर पहुंचे फॉर चुटकीज परफॉर्मेंस। साथ बढ़ने का रास्ता दिखाया, जहां कम्युनिटी ने हौसला बढ़ाया। एक बेहतर कल का सपना सजाया, जहां एनवायरनमेंट को अपना दोस्त बनाया। तुमसे ही है ये समा, दादी को ऑलराउंडर की नई पहचान मिली। बदला है सारा
सेकेंड इनिंग्स का पिच सजाया, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से बिजनेस के सक्सेस का मंत्र बताया। तूने हर लम्हे को सवारा है, गोल्स अचीव कर सको ऐसी पार्टनरशिप्स का प्लेटफॉर्म बनाया। और ऐसा घर बनाया जिसने आपके सक्सेस को अपने गले लगाया। ये सब मुमकिन किया है एक सोच ने और उसे सच बनाने की जिद ने। क्योंकि लाइफ जैसी बनाओ वैसी बनती है, जितनी सवारो उतनी निखरती है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, क्राफ्टिंग लाइफ। Good evening everyone. A very warm welcome to all the business partners in the CP Meet. आप सभी का इस बिझनेस पार्टनर मीट में स्वागत है. उपस्थित सर्वांचे या बिझनेस पार्टनर मीट मध्ये हार्दिक स्वागत आहे. इस कॉल पर या इस मीट में आज जितने भी हमारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं, उनमें से ज़्यादातर सभी लोगों ने हमारे हैप्पीनेस कल्याण लॉन्च में पार्टिसिपेट किया है. And they all have seen the success of this launch. And now it is time that we have come up with a new project launch in Kalyan. And we are pretty confident that we are going to repeat the history again. Before we move ahead and talk about the project in detail, let us look at the various diversified businesses Mahindra Group is into. Can I have the AV, please?
Now that we have seen the AV and we have seen the different businesses we are into, but today is the day when we'll be speaking only about real estate sector. We are present in 7 different cities across the country and we are present in 4 sectors. प्रीमियम हाउसिंग मतलब ये वो सेगमेंट है जहां पे जो टिकट साइज 5 करोड़ के अंदर है उसको हम प्रीमियम हाउसिंग में गिनते हैं. द सेकंड सेगमेंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज वैल्यू हाउसिंग, द मोस्ट हैपनिंग सेगमेंट टुडे. सारे वैल्यू हाउसिंग सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स जो है वो हम कवर करते हैं हैप्पीनेस्ट नेम के अंडर. जो कल्याण 2 की हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो बिन कवर्ड अंडर वैल्यू हाउसिंग एंड हैप्पीनेस्ट. इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अंडर इंडस्ट्रियल क्लस्टर वी कवर दिस ब्रांड अंडर ओरिजिन. ओरिजिन के नाम के अंदर हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर के सारे प्रोजेक्ट्स हम कवर करते हैं. एंड अंडर द इंटीग्रेटेड सिटी वी आर कवरिंग द प्रोजेक्ट्स अंडर द नेम महिंद्रा वर्ल्ड सिटी. Let us look at some very high velocity launches that we had in last 2 years. और ये सारे launches जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 5 या 6 जो भी launches है, ये सारे launches I have not picked up few launches to show you to on the screen. ये सारे के सारे launches है जो लास्ट 2 साल में हुआ and they have been greatly successful, highly successful, bumper success देखा है इन 5 प्रोजेक्ट्स ने. अब ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हुए हैं. कुछ ऑफलाइन हुए हैं मतलब फिजिकल हुए हैं या तो कुछ ऑनलाइन भी हुए हैं. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा हमारे महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण की जो 2019 में लॉन्च हुआ था. एंड एज यू कैन सी 77% ऑफ द यूनिट्स वर सोल्ड इन द लॉन्च इटसेल्फ. जब मैं लॉन्च की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 45 डेज के पीरियड के. तो उस पीरियड के अंदर हमने 77% इन्वेंटरी सोल्ड आउट. द नेक्स्ट लॉन्च विच आई एम प्राउड टू डिस्कस अबाउट इज द महिंद्रा पालघर लॉन्च, पालघर 2, ये जो सेकेंड फेज का हमने लॉन्च किया था. This launch was one of its kind, an absolutely digital launch. ये launch हमको बहुत कुछ सिखा गया. The first and the foremost thing that which has taught us is कि अगर अच्छे ब्रांड में एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च होता है और आप अगर वो ऑनलाइन भी करते हो जिसमें टच एंड फील नहीं होता, फिर भी एक क्लाइंट इसको ले सकता है. So it has more to do with the product that you offer in the market, it has more to do with the brand. And we are proud to say that we sold 55% of the units absolutely on the online platform. The other 2 launches talking about is Pune, and I'm talking about Chennai and also Alco. ये सारे projects, irrespective of the segment, be it a mid-premium segment or a value segment, be it an online platform or an offline platform, be it in Mumbai or be it in some other city, एक चीज इसमें common रही है वो है हमारे business partners का contribution, which is substantially high. If I just pick Kalyan and speak to you, 70% contribution. मतलब 77% अगर आप लॉन्च हो 70% कंट्रीब्यूशन कितना हाई हो जाता है आप सोच सकते हो. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब जो हमारा कल्याण 2 का लॉन्च होगा उसमें भी हमारा बिजनेस पार्टनर्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्रीटी हाई होगा. लेट अस लुक एट सम सक्सेस स्टोरीज हियर ऑफ कल्याण दैट वी डिड. अब मैं बोलते रहा हूं आपको कि 77% कंट्रीब्यूशन, 77% ऑफ द यूनिट्स वर सोल्ड इन द लॉन्च इटसेल्फ. अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करूं तो मैं बात कर रहा हूं 1000 से ज्यादा यूनिट्स की और उसमें 70% कंट्रीब्यूशन मतलब 700 से ऊपर यूनिट जो थे वो हमारे बिजनेस एसोसिएट्स ने बेचे हुए हैं, विच इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, इजंट इट. एमआरपी की मैं बात करता हूं. एमआरपी इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक एंड वी इंट्रोड्यूस दिस ड्यूरिंग आवर कल्याण लॉन्च. सिंपल सा कंसेप्ट है, जो क्लाइंट पहले एमआरपी करेगा वो सबसे ज्यादा बेनिफिट लेकर जाएगा. उसका 1500 प्लस एमआरपीज हमने इस लॉन्च में करे थे, which is very huge in number. And then we move on to the another success story here. भले 2019 में लॉन्च हुआ था, हमने उस वक्त पे कमिट किया था कि हम जो भी आपका पे आउट बनता है वो हम 15 डेज में डिलीवर करें. एंड वी कुड एक्चुअली मीट दैट. मतलब जब से इनवॉइस रेज हुआ है तब से 15 दिन के अंदर आपका पे आउट हुआ है. Isn't that really something which you need to ये चीजें होती हैं जो किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस में बहुत ऐड करती है. इफ द एसोसिएट्स वर्किंग विद अस आर हैप्पी, दे आर कंटेंटेड विद द वे द सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट एड्स लॉट ऑफ वैल्यू टू द एंटायर लॉन्च. 90% ऑफ द यूनिट्स आर सोल्ड आउट व्हाइल आई एम स्पीकिंग टू यू टुडे. मतलब 2024 के पोजीशन की मैं बात कर रहा हूं और आज जबकि रफली 2 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है, मैं 90% यूनिट सोल्ड आउट की बात कर रहा हूं. क्या रीजन है? इतना बड़ा सेल आउट कैसे हो सकता है? प्रोडक्ट तो बेहतर है, ब्रांड भी अच्छा है, लेकिन जो सराउंडिंग में डेवलपमेंट हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है,
कुछ चीजें अगर मैं बताऊं तो जैसे दुर्गाड़ी ब्रिज फंक्शनल हुआ है, राजनौली ब्रिज जो है वो फंक्शनल हो चुका है, कल्याण और भिवंडी रोड है वो 6 लेनर में कन्वर्ट हो चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेट्रो लाइन का काम है वो भी शुरू हो चुका है. सो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दिस सराउंडिंग एड टू द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट. मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आउट ऑफ द 7 टावर्स, 6 टावर्स आर टॉप्ड आउट एंड 7 टावर विल टॉप आउट एनी टाइम. मतलब टॉप आउट सारे के सारे प्रोजेक्ट हो चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसका जो पोजीशन है वो उसको प्रीपोन करें. ये सारी चीजों का ऑब्वियस इंपैक्ट है वो उसके अप्रिसिएशन पे आता है. 27% appreciation over the launch price. This is, boss, absolutely unheard of. Be it a micro market or any market. And देखो, प्राइस तो बढ़ जाता है या शायद डेवलपर बढ़ा भी दे, लेकिन क्या वो प्राइस एब्जॉर्ब हो रहा है मार्केट में? क्या क्लाइंट उस प्रोडक्ट को उतना वैल्यू देना चाहता है, मतलब उतना एक्सेप्ट करता है? एंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज यस. आज भी 27% अप्रिसिएशन पे हम वो यूनिट्स, उसकी यूनिट्स बेच रहे हैं. And now that we are only in 2 years of the launch, और काफी टाइम बाकी है पोजीशन को, you can just imagine we are into this business and we can imagine कि by the time we reach the OC, by the time we reach the possession, ये 27% का जो appreciation है वो क्या लेवल तक पहुंचेगा. भाई कोई नंबर नहीं कोट करना चाहता हूं, but I want to leave you with the thought here कि what will be the appreciation. No marks for guessing it right. This is all from my side. Now I will call upon Abhinav to take you through the product presentation. Thank you so much. Thank you, Ujjwal. दोस्तों, it is very important to maintain your health and everyone has their own way to be healthy. मेरा एक दोस्त है who believes running will keep him healthy. He ensures that he goes for running every day. On weekends, he goes to run on hilly terrains and participates in marathon. कुछ वैसे भी हैं जो पूरे 365 डेज डाइटिंग पे रहते हैं, मेजर कर कर खाते हैं कितना फैट, कितना कार्ब्स. कुछ फ्रेंड्स हैं जो जब भी स्ट्रेस में होते हैं मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने लगते हैं. और एक मैं हूं जो एक्सरसाइज को हर न्यू ईयर रेजोल्यूशन में रखता है, बट 2-3 वीक में ही सब कुछ खत्म हो जाता है. हम सभी की हेल्थ जर्नी कंप्लीट नहीं होती है. द फैक्ट इज, जब आपका घर हेल्थ में नहीं देगा साथ, तो अधूरी हेल्थ ही आएगी हाथ. हेल्थ विल बी इनकम्प्लीट. कंफ्यूजन हो रहा है घर और हेल्थ का कनेक्शन? मैं बताता हूं. टू आंसर ऑल आवर प्रॉब्लम्स वी प्रेजेंट क्राफ्टिंग लाइफ एट इंडियाज फर्स्ट हेल्थ संपन्न होम्स. और हम सभी जानते हैं कि हेल्थ के जब तक तीनों एस्पेक्ट्स फिजिकल, मेंटल और सोशल का ख्याल ना रखा जाए तो हम हेल्थ संपन्न नहीं हो सकते. जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जस्ट कीपिंग check on just one aspect of health, not all three. At Mahindra Happiness Kalyan, we have unique amenities that help you live a health संपन्न life. आइए हम कुछ ऐसे amenities को देखते हैं. हम में से जो भी साइकिलिंग इंथुजियास्ट हैं, वो साइकिलिंग का लुफ्त उठाने के लिए वीकेंड्स को हिली टेरेन में जाते हैं. As a result, we can do it only once a month. In our project, we have inclined ramp where residents can cycle and jog uphill and downhill in their own development as many as times they want. Yoga is also really popular today. We offer beyond that, rope wall yoga to boost your mental health. And to improve your social health, we have provided camping areas where you can go on weekend getaways even on your weekdays. All these facilities are things that consumer don't get even in a modern development and needs to go beyond his house to enjoy them. But here at Mahindra Happiness Kalyan too, they can be part of your daily routine without wasting any travel time. वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल बताना चाहूंगा कि कैसे हमारी हेल्प आपको हेल्थ संपन्न बनाती है. Most of us prefer sports to be physically fit versus exercising. Here we offer many popular sports amenities to modern popular elite games like squash for your physical health. We all know that when we get a chance to explore our creativity, it boosts our mental health. Here we offer hobby rooms to help its residents indulge in activities they enjoy.
At our organic farm, the residents can collaborate with like-minded individuals who believe and participate in community farming activities. At Mahindra Happiness Kalyan 2, we are also providing parkour and obstacle course to provide variety in your fitness routine so that आप कभी बोर ना हो। हम समझते हैं आपके कंसर्न जब हम या हमारे अपने हॉस्पिटलाइज होते हैं फॉर ट्रीटमेंट। We want to do whatever we can. For these difficult times, Mahindra Lifespaces, for the first time in this category, is offering homes with a health insurance so that we can partner in your tough times. यहाँ पे amphitheater जैसी facilities enables like-minded residents to come together and enjoy a socially healthy life. In our development, there are many more amenities like this which help its residents to live a health sampanna life. Let us look at the logo of Mahindra Happiness Kalyan 2. Just to emphasize, our earlier project in Kalyan was Mahindra Happiness Kalyan. We are presenting Mahindra Happiness Kalyan 2. Now let's look at the project location video and how it enables convenience for its residents. एक संपन्न कल की शुरुआत होती है एक संपन्न घर से, जहां हर किसी को मिले अपने सपनों को पाने का रास्ता और अपनों से जुड़ने का नया बहाना। ऐसा घर जो कनेक्टिविटी के हर साधन जैसे रेल, मेट्रो और रोडवेज से आपके ट्रैवल को आसान बनाए। जहां पास के लीडिंग स्कूल्स आपके बच्चों के हुनर को तराशे और उन्हें आसमान छूने की काबिलियत दे। जहां खिलखिलाती मेमोरीज हर रोज बने और कौन सी जगह ज्यादा अच्छी है उसमें खूब डिबेट सजे। चाहे वो हो 300 साल पुराना दुर्गड़ी किला या हो मेट्रो जंक्शन मॉल में फैमिली के साथ मूवी नाइट, यहाँ हर मेमोरी विल लास्ट अ लाइफ टाइम। यहाँ अपॉर्चुनिटी भी हर रोज दस्तक देगी, रोज एक नया मुकाम, नया स्कोप दिखाएगी। चाहे वो हो मुंबई दिल्ली के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के पास या थाने's बूमिंग आईटी हब, या हो फ्रॉम भिवंडी's ग्रोइंग वेयरहाउस नेटवर्क, यहाँ एक संपन्न कल सजाने का मौका मिलेगा हर मोड़ पर। और इसी संपन्न कल को तराशा है हैप्पीनेस कल्याण 2 के नए घर ने। महिंद्रा हैप्पीनेस कल्याण 2, आपके संपन्न कल का कल्याण। जैसा कि आपने देखा, Mahindra Happiness Kalyan 2 has excellent metro, road and rail connectivity. Now let's look at the master layout. We have more than 500 trees in the development and 75% of the spaces are open. We are launching 4 towers of 14 floors with variants of 1 and 2 BHK. The curved prominent portion in the central green is a ramp which is our design signature for this project. The ramp starts from ground level and goes till a height of 2nd floor and is further connected to 4th floor of the multi-level car park. The clubhouse is placed under the ramp. To understand the project better, let's look at the project walkthrough.
With central green roof and 55 plus amenities suitable for all age groups, Mahindra Happiness Kalyan 2 enables health sampanna life. Now to speak about one more feature we are proud of, and we have included this in all our value housing projects, My Series, जहां आपके consumer can co-create amenities based on popular choice and economic viability. At Mahindra Happiness Kalyan 2, we are providing 5 options to choose from: hobby room, guest room, exhibition room, study room, and storage room. As we all know, at Mahindra, we believe in sustainable development, and all our projects are green building certified. Let's look at a small video highlighting the sustainability features being used at Mahindra Happiness Kalyan 2. Earth, nature, and all that is natural, they don't belong to us. We belong to them. Why exploit when you can explore? Why struggle when you can balance? Why be far when you can be closer? Turn your thoughts into reality. Breathe. Grow. Live responsibly. Climate change is not new. But what can we do to play a positive role in it? Opt for airy homes, which are climate responsive and also benefit from effective shading. Reflect off the heat with SRI paint. All this just for a healthy indoor setting. While in the outdoor, experience the power of green energy. Don't just consume natural resources, but also save them with our unique measures of saving energy cost effectively. Nothing is as important as what we breathe in, which is why our green cover of native trees act like lungs for the entire community. Not just this, the low VOC paint we use inside our home, and with ample ventilation in each room, you will always breathe in fresh air. Live in a thermally comfortable home, which leads towards a healthier life in harmony with nature. As the elixir of life, water is in demand every single day, which is why we work hard to save every drop we can. Every drop saved is a drop not wasted. Thanks to our water efficiency measures, we are saving more than we thought. Speaking of natural waste, we turned our waste issues into wealth kilos. Here's how. We segregate waste at source, compost our wet waste, and recycle as much as possible. You see, it's all about the cycle of taking and giving back to nature. Indoor or outdoor, for you and your family. Harmonize your body, mind, and soul. Find the good health in life you always craved for. Crafting life at India's first health sampanna homes. Mahindra Happiness Kalyan 2. जैसा आपने वीडियो में देखा, we are providing climate responsive homes which provides thermal comfort with adequate air circulation and sunlight. We have provided solar panels which can save almost rupees 39 lakh of annual common area power bill for the society. Rainwater harvesting technique and the STP will take care 100% of your flushing and landscape irrigation requirements. This is all about the project now. Now I will call Abhijit to take the presentation forward. थैंक यू अभिनव। दोस्तों, अब तक आप ये तो अग्री करोगे दैट अल्दो हम इसको वैल्यू हाउसिंग कहते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट किसी सुपर प्रीमियम लग्जरी से कम नहीं है। 2019 में जब हमने हैप्पीनेस कल्याण 1 लॉन्च किया था, तब हमारे पास एक ही टूल था, एक ही औजार था, वो था मार्केट रिसर्च। लेकिन तब से लेकर आज तक हज़ारों क्लाइंट्स और पार्टनर्स को मिलने के बाद हमें काफ़ी सारी लर्निंग्स आई हैं, काफ़ी इनसाइट्स आई हैं। तब हमारे लिए अननोन टेरिटरी थी, लेकिन अब हमारे पास लर्निंग्स है, इनसाइट्स है, पेन पॉइंट्स है, जिसको हमने अपने करंट प्रोडक्ट में रेक्टिफाई किया हुआ है। कोविड आने के बाद हमें एक चीज़ तो पता चली है कि अपनी करंट घर में क्या खामियां हैं डिज़ाइन को लेके। एक ही घर के अंदर
बच्चे की ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है और पेरेंट्स का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है जिसमें वो कॉल्स पर है, सबका ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है. इट रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ केओस एंड दैट्स वेयर वी थॉट इट्स मोस्ट important to come up with very efficient layouts. So guys, let's look at the first layout that we have. So the smallest configuration that we have, we call it a 1 BHK-A. It's about a 393 square feet house. First thing that you will notice कि इस घर में passages कहीं नहीं है. अगर आप मार्केट में कोई 393 स्क्वायर फीट लेआउट खरीदने जाएंगे, आप देखोगे तकरीबन 40 से 50 स्क्वायर फुट का एरिया पैसेजेस में ही चला जाता है, विच इज़ नॉट यूजेबल. लेकिन यहाँ पर मेरा पूरा 393 स्क्वायर फीट इज सर्कुलेशन स्पेस. इट इज एवरी सिंगल स्क्वायर फुट इज यूजेबल इन दिस पर्टिकुलर लेआउट. द बेडरूम दैट आई हैव, डिस्पाइट इट बीइंग द स्मॉलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, इज अबाउट 120 स्क्वायर फीट. और ये बेडरूम की खासियत ये है कि द नीश जो वार्डरोब वाला एरिया है वो हमने बेडरूम के अंदर दिया हुआ है. इसका एडवांटेज ये है कि आपका वार्डरोब बेडरूम स्पेस के अंदर नहीं आता और आपको प्रॉपर रेक्टेंगुलर एरिया मिल जाता है सर्कुलेशन के लिए. इसके अलावा अगर आप देखोगे, क्रॉस वेंटिलेशन इज वन ऑफ द फैंटास्टिक एलिमेंट्स दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर. वी हैव मेड इनफ प्रोविजन फॉर लाइट एंड एयर टू एंटर एंड सर्कुलेट फ्रीली इनसाइड द हाउस. Next, coming to the larger 1 BHK that we have, 1 BHK-D. It's a proper rectangular living dining, gives you a very good depth of the house, right? इसमें added advantage is the balcony that you see. जब से न्यू DCR आया, आपको सबको पता है कि डेवलपर्स ने थोड़ा balcony के बारे में कंजूसी की हुई है. लेकिन जब ये प्रोडक्ट खड़ा होगा, जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, this is one product that will stand out because of the design element of the balconies in this. This project is surrounded by a lot of natural beauty. There are a lot of open areas, green areas. Imagine sitting in that balcony after a day of hard work, enjoying a cup of coffee, sitting and enjoying the views. So this is one of the benefits that we are offering in this particular layout. Not just that, मेरा bedroom का जो space है, it is about 140 square feet. Again, we have given a niche. और आपने previous layout में भी देखा होगा, इसमें भी देखा होगा, we have given something which is called a work from home corner. आप वहाँ पर बैठकर अपने ऑफिस के कॉल्स ले सकते हो, या तो बच्चों की पढ़ाई वहाँ पर हो सकती है, या फिर किसी और पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हो. बट एज अ डेवलपर वी हैव बीन कॉन्शियस टू गिव दिस पर्टिकुलर स्पेस टू द कस्टमर एंड हिज फैमिली टू यूज. नेक्स्ट लेआउट दैट वी हैव इज अ 2 BHK, द स्मॉलर 2 BHK दैट वी हैव. अगेन इफ यू सी, द बेडरूम्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द रूम. व्हाट दिस डज इज कि अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो उनको आपके पर्सनल स्पेस में आने की ज़रूरत नहीं है. द पर्सनल एंड प्राइवेट, द पब्लिक स्पेसेस कैन बी सेग्रीगेटेड essentially, right? So again, a rectangular living dining. Both the bedrooms are at least 120 square feet. This covers the wardrobe and the work from home area that we have. Balcony, again, like I said, is one of the features in this 2-bed. और lastly, मेरा सबसे बड़ा 2-bed जो है, again, massive layouts. This is probably one of the larger sizes available in that particular micro market. 650 square foot का है ये 2-bed. Again, no passages as you can see. Effective circulation space in and around the house. Cross ventilation is taken care of. And the bedroom size goes as high as 140 square feet, guys. तो अब मैं इतना तो कन्विंस्ड हूँ कि हमारे लेआउट स्टडी करने के बाद आई एम श्योर कहीं पे भी आप उंगली नहीं रख सकते कि यार ये चीज़ रहेगी आपके लेआउट में. This is one of the best layouts and most of the learning has come to us from the first launch that we did. तो अभी हमने प्रोडक्ट प्रपोजिशन समझ लिया है, लेआउट्स देख लिए हैं, अब सस्पेंस, प्राइसिंग क्या है. हम लोग जब मार्केट में गए थे, हमने स्टार्टिंग प्राइस इंट्रोड्यूस की थी 40 lakhs. आप सबको बताया गया था 40 lakhs एंड ऑनवर्ड्स. चलो देखते हैं प्राइसिंग क्या है. तो गाइस 39 lakhs, 40 lakhs का एक्सपेक्टेशन सेट किया था. 39 lakhs, नॉट बैड. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्राइस. चलो शुरुआत करते हैं सेल्स करने के लिए. लेट्स मूव ऑन फर्दर. चलो आपके लिए स्वीटनर.
37.5 lakhs. आई थिंक दिट्स अ फैंटास्टिक प्राइस. इसमें कोई नेगोशिएशन का स्कोप नहीं है. वेरी स्वीट प्राइस, नोबडी कैन कंप्लेन, राइट? चलो लेट द चेक स्टार्ट कमिंग. चलो आगे बढ़ते हैं. Wow. What more do you need? 35.45 lakhs, guys. This is the final pricing at which my 1 BHK starts. Go out, don't wait for a single moment. भीड़ लगा दो और चेक लेके आइए. So my 1 BHK starts from 35.45. Let's see 2 BHK का starting price क्या है. $55.44. So guys, this is the final price for a 2 BHK. 35.45 for a 1 bed, 55.44 for a 2 bed. This is the price at which we are offering this particular product. अब आप जब मार्केट में कोई और प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपके घर के प्राइसिंग के साथ और क्या क्या आता है? GST, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, developmental charges, XYZ charges, but in this case GST is included, stamp duty included, maintenance for a period of 2 years post possession is already included, and development charges are included. What this means, there are zero additional charges, guys, and this is the whole benefit of working like a brand, working with a brand like Mahindra. अगर हम एक प्राइस कमिट कर रहे हैं तो हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं. देयर आर नो हिडन चार्जेस. दिस इज व्हाट वी स्टैंड फॉर. वी स्टैंड फॉर ट्रस्ट एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंसी दैट वी आर ऑफरिंग टू द कस्टमर्स. एब्सोल्युटली नो हिडन चार्जेस. ऐसा नहीं कि आपको एक प्राइस बताकर ला रहे हैं, टेबल पे प्लस 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 जोड़ते जोड़ते प्राइस बढ़ रही है. जो प्राइसेस आपने देखी वही प्राइसेस है. सो क्विकली लेट्स लुक एट व्हाट आर द रेंजेस ऑफ प्राइसेस. सो माई 1 BHK जो 393 वाला है 35.45 लाख से शुरू होता है, हाईएस्ट बैंड पे जाता है अराउंड 40.46 लाख तक. 1 BHK D, the larger one starts from what 42.99, goes up to 48.13. 2 BHK, the smaller one, starts from what 55.44, goes to 61.15, and the larger 2 bed starts from what 61.77, goes up to 68.44. Now we were the first guys in the market to introduce a concept which was called MRP, which stood for Multiplier Rebate Plan. और ये जो कंसेप्ट था वो हमने इसी कल्याण मार्केट में ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था और बहुत कस्टमर्स ने इसका फ़ायदा उठाया था. ये कंसेप्ट ये है कि जितना जल्दी आप हमें अपना इंटरेस्ट शो करते हो, जितना जल्दी आप टोकन करते हो, उतना आपका बेनिफिट बढ़ते जाता है. जितने कस्टमर्स बाद में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे उतना पहले कस्टमर का फ़ायदा बढ़ते जाएगा. एक छोटा सा वीडियो है, वो देखते हैं और फिर इस बारे में डिस्कस करते हैं. सो गाइज, एज वी सॉ, एमआरपी में दो बेनिफिट्स हैं आपके. एक तो फेब के महीने में जो भी कस्टमर मुझे चेक देगा उसको एक अश्योर्ड बेनिफिट है बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द एमआरपी विंडो. एडिशनली जितना जल्दी मुझसे जुड़ेगा
उतना उसका और भी बेनिफिट है. सो द टोकन अमाउंट इज 45,000 rupees which he needs to transfer. Once he transfers a 45,000 rupees amount into our account, he by default stands to gain 51,000 rupees as an additional benefit. So जो prices आपने देखी उस पे 51,000 और माइनस कर दीजिए, right? So once we deduct the MRP benefit of 51,000, let's see what is the final amount that we can look at. So guys, 40 लाख से शुरुआत की थी, 35 लाख के नीचे आ गए, 34.94. We are making it a no brainer for you guys. चलो इसके अलावा एक और बेनिफिट दे देता हूं मैं आपको. हम टिपिकल मार्केट स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस ये होता है, एक महीना EOI चलता है, एक सर्टन नंबर आता है, उसके एक महीने बाद कस्टमर्स को बुलाते हैं कि सर आइए इन्वेंट्री फाइनल कर दीजिए. इसमें होता ये है कि आपकी और हमारी दोनों की मेहनत डबल हो जाती है. कस्टमर को 2 बार प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है और उसमें आधे कस्टमर्स बैकआउट कर देते हैं. बट दिस टाइम टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ बुकिंग, टू मेक जस्टिस टू योर एफर्ट्स, हमने ये कंसेप्ट लाया है कि जिस दिन आपका कस्टमर टेबल पर आके मेरे सामने बैठता है, इफ ही लाइक्स द इन्वेंट्री आई कैन ऑफर इट ऑन द स्पॉट टू हिम. And if he does the entire booking, which is the 5% as the booking amount, if he pays me within the next 7 days, then there is an additional benefit of rupees 45,000. तो फिक्स्ड MRP बेनिफिट हो गया 51,000 का. ये एक बेनिफिट हो गया 7 दिन के अंदर अगर बुकिंग करता हूँ 45,000 का. 96,000 रुपीज इज द एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम आवर एंड दैट वी आर गिविंग टू द कस्टमर. और इसके ऊपर है वेरिएबल बेनिफिट. जितना जल्दी मुझे अगर वो MRP देता है तो एक वेरिएबल बेनिफिट भी है. सो दोस्तों, हम तो सब इंडस्ट्री के हैं. अपना फर्स्ट एम शुड बी फर्स्ट वॉक इन के दिन पे नेट बुकिंग करनी है अपने को. फिर भी अगर कस्टमर कहता है मुझे थोड़ा टाइम है, फैमिली को दिखाना है, घर वालों को दिखाना है, देन वी से सर एटलीस्ट पे 45,000 रुपीज एंड गेट एन MRP नंबर जनरेटेड. आप 2 दिन बाद आओगे, हो सकता है 200 कस्टमर और आ जाए, आप क्यू में उतने पीछे चले जाओ और आपका वेरिएबल डिस्काउंट उतना कम हो जाएगा. टू समराइज 3 बेनिफिट्स, MRP फिक्स्ड बेनिफिट 51,000 रुपीज. अगर 7 दिन के अंदर पूरी बुकिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है, अनदर 45,000 रुपीज, एंड देर इज एन MRP वेरिएबल डिस्काउंट विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज मोर एंड मोर कस्टमर्स गिव MRP आफ्टर दैट पर्टिकुलर कस्टमर, राइट? सो आप सबको पता है, एज महिंद्रा एज अ ब्रांड वी आर वेरी हेविली इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, एंड वन ऑफ द एप्स दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ फॉर आवर बिजनेस पार्टनर्स इज द हैप्पी एज ऐप. दिस इज अ वन स्टॉप शॉप, एंड व्हेन आई से इट आई ट्रूली मीन इट. दिस एक्चुअली रिप्लेसेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ डायरी. जो आप डायरी या एक्सेल शीट में अपना डेटा हिसाब रखते हो, वो पूरा नीड एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि आपके हर कस्टमर के डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखते हैं, आपके इनवॉइसिंग के डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखते हैं. वेदर यू आर अ 1 member टीम और वेदर यू आर अ 500 member टीम, माई ऐप कैन टेक केयर ऑफ इट. इस ऐप के थ्रू आप मेरे लेटेस्ट कोलैटरल्स देख सकते हो, लेटेस्ट इंसेंटिव स्लैब्स देख सकते हो. तो आपको हर बार महिंद्रा के आदमी को फ़ोन करने की जरूरत नहीं है कि सर ये आपका इंसेंटिव स्लैब क्या है, कैन आई गेट द लेटेस्ट क्रिएटिव्स बिकॉज आई वांट टू अपलोड माय माइक्रोसाइट. जस्ट लॉग इन टू दिस ऐप and you can get going. Now this app is also available on Play Store and App Store. So now we are towards the business end. We've understood what is in it for the customer. Now let's understand what's in it for you. जब हम आपको एक बिजनेस पार्टनर बुलाते हैं तो we make sure that we are both in it truly. And we are both getting wealthy at the same time. We want you to make money with us. We want you to remember us as one of the business partners who really helped you reach there. So right from the first deal, we are making sure that we are offering 2.5%. अगर आप उस माइक्रो मार्केट में स्टडी करोगे तो इससे कई ज़्यादा मुश्किल प्रोडक्ट है. हो सकता है रेप्यूटेड डेवलपर्स के भी ना हो, रेप्यूटेड डेवलपर्स के हो, लोकेशन थोड़ा वीक हो, they are still starting their slabs at 2%. Right from the first deal, we are offering 2.5%. Next, 2 to 5 deals, we are offering 2.75%. This increases by 0.25. 6 to 10 deals, 3%. अब आप लोग तो काफ़ी अग्रेसिव हो तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. थाने मार्केट हो गया, KDMC मार्केट हो गया, आप सब इस मार्केट में काफ़ी एक्टिव हो. आप अपना एग्जिस्टिंग डेटा भी चर्न करोगे तो भी बहुत ईजीली, विदाउट ब्लिंकिंग एन आई, इट्स वेरी इजी टू रीच द 3% स्लैब.
Next, 11 to 25 deals, 3.5%. गेम बढ़ते जा रहा है. 26 to 50 deals, 4%. And lastly, 50 deals and above, we are offering a very attractive slab of 4.5%. What's more, we want you to source more across the globe. If you source an NRI customer for us, there is an additional 0.25% on that particular deal to be made. So go local, go global, but get sourcing. Right. So that brings me to the conclusion of today's evening. I'm sure by now you're already picking up the phone, calling up your customers. Our site is ready to welcome you and your clients. We have a fantastic sample flat waiting. Our staff is waiting. We are more than eager to attend them. My team is there in place. अगर आपको कोई भी ज़रूरत लगती है, कोई भी support लगता है, please reach out. But this time, I will take nothing short of a sellout from you guys. And I really look forward to your support. Thank you so much. Wish you all the best.